ओके, मूविंग ऑन, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ ऑफ द फिल्म के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फिल्म स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाहूँगा। शोएब मंसूर साहब की ये पहली फिल्म थी और फीचर फिल्म। इससे पहले उन्होंने काफ़ी हिट ड्रामाज और गाने प्रोड्यूस किए हुए हैं। द फिल्म स्ट्रक्चर इज सेट इन अ वे कि ही स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम जस्ट बिफोर द क्लाइमैक्स सीन कि ही लीव्स यू विद समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, ये एक बड़ा एक यूजुअल मेन स्ट्रीम तरीका है फिल्म को स्टार्ट करने का, जस्ट टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस के देर हुक टू समथिंग। बट मैं अगेन आज के दौर से उसको टाई करूँ इन 2024, we are mostly driven to make content in a way that we show you the payoff to a certain extent first to create that hook and then lead you towards spending your time in watching and going through the whole content. So आज के ज़माने में इसको ज़रा हुक और उस तरह से सेंस में लिया जाता है। पिछले ज़माने और उस टाइम के हिसाब से it was a way of film language. It was a clean and neat way of starting your story. An interesting way, but इस तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुई भी थी। सो ये एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट है कि वो शान के रिहेबिलिटेशन सेंटर से शुरू करते हैं, विच वाज जस्ट बिफोर द क्लाइमैक्स सीन, और उसके बाद फिर वो कहानी शुरू करते हैं थ्रू द म्यूज़िक सॉन्ग, आई थिंक फवाद और शान का। सो इट्स मोस्टली लीनियर स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, लेकिन इसके अंदर इंटरकटिंग बहुत ज़्यादा थी कि एक सीन उधर चल रहा है, एक सीन उधर चल रहा है, फिर वो आपस में इस तरह चल रहे हैं। सो वन गुड थिंग अबाउट क्रॉस कटिंग इज दैट you when you come on the editing phase, you have a lot of room to hold and maneuver and capture the storytelling and the flow of the story. सिर्फ उसमें चैलेंज ये आ जाता है कि अगर आपकी कोई स्टोरी सही टाइम में पूरी नहीं हो रही तो फिर उसके लिए आपको बीच में एब्रप्ट कट्स करने पड़ जाते हैं। सो उसकी वजह से थोड़ा सा एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्रप्ट कट्स या जंप्स आपको फील होते हैं कि कहानी एकदम से यहाँ से वहाँ चलेगी। बट नेवरदलेस स्टिल द फिल्म स्ट्रक्चर एंड द एडिटिंग, इट वाज प्लान्ड आउट सुपर्बली वेल, क्योंकि अगर एक जगह कहानी का अगर कोई टर्निंग मोमेंट आ रहा होता था तो दूसरी तरफ भी कहानी उतने ही टर्निंग पॉइंट पे पहुंची होती थी, एंड बोथ ऑफ द स्टोरीज वुड कन्वर्ज टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत खूबसूरत तरीका था, और क्रॉस कटिंग के लिहाज से स्क्रिप्ट को इस तरह से तैयार करना और फिर उसको शूट करना, हर एक सीन को सर्टन लेंथ के हिसाब से कि एडिटिंग फेज के अंदर वो सारी चीज़ इट ऑल कम्स टुगेदर। इट्स ब्रिलियंट, इट टेल्स देयर इज रियली हार्ड वर्क बिहाइंड इट, एंड आई विश आई कुड डू समथिंग लाइक दिस एज वेल इन द फ्यूचर। एंड देन फाइनली व्हेन द फिल्म कम्स क्लोज टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स, सो वहाँ पे ये था कि इंटरकटिंग फिर इवेंचुअली जो क्रॉस कटिंग थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, एंड देन वी वेंट इनटू द कोर्ट रूम सीन, और वो एक लंबा सीन था जिसके अंदर पूरा एक उन्होंने क्लाइमैक्स को बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड किया। दे टुक देयर टाइम, वहाँ पे कोई छोटा सीन नहीं था, बाकी बीच में छोटे छोटे सीन काफ़ी थे, बट यहाँ पे दिस वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीन्स और बात को कंक्लूड करना था। और उसके बाद भी फिर कोई और क्रॉस कटिंग नहीं आती, फिर शान का आई थिंक पार्ट आता है जिसके अंदर वो घर पे आता है, और फिर बिल्कुल लास्ट सीन जिसमें फवाद खान जाके अजान देता है, और फिर वो मौलवी साहब को उस टाइम पे उनकी आवाज़ पसंद नहीं आती, एंड वो अपने दूसरे साथी को कहते हैं कि तुम जाके अजान दो। तो वो जो एंडिंग थी, बिल्कुल लास्ट फ्रेम था जिसमें 2 अजानें हो रही थी। आई मीन दैट वाज स्प्लेंडेड फॉर मी फ्रॉम a viewer's point of view. It really gave me goosebumps. I was not expecting such a last frame, and to end the film at such a strong last note के 2 अज़ानें हो रही हैं। I mean कितना इससे पता चला कितना चैलेंज किया गया आपको ये फिल्म देखते वक्त। It's not just a film, it's a thought provoking journey कि it compels you to go deep into your thoughts, your research, your understanding of the things and question things. Anyone would, especially at the age of 17, would question कि ये क्या हो रहा है। But it was super. I really loved it, और it really alleviated your emotions to the highest level. और वो एकदम से सीन ख़त्म होता है, blackout, and then the
title song Allah Who Plays Out, I mean, that's brilliant, superb. The camera movements, the choice of shots, the length of shots, how it was seen in the film. The most interesting thing which I noticed was there were a lot of slow track-ins, slow track outs, and slow truck left and right, and many truck down shots from the jib. तो पुरानी फिल्म लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए और जिस तरह का मैसेज था फिल्म का, वो उस हिसाब से ये इस तरह की शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी थी कि जिस तरह से आराम से वो कैमरा उसके ऊपर जिप के ऊपर आराम से नीचे आ रहा है, पूरा सीन ऐसे रिवील हो रहा है. अगर कोई लॉन्ग डिस्कशन हो रही है, जैसे कई दफ़ा हुआ है, जैसे शान और फवाद के बीच में लॉन्ग इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, या मौलवी साहब और फवाद खान के बीच में डिस्कशन हो रही है, तो कैमरा बहुत लंबा ऐसे पीछे से स्लो ट्रैक इन होता है और पूरा डायलॉग सिंगल टेक है, और वो सिंगल शॉट के अंदर पूरा सीन वो जो है वो उन्होंने ख़त्म किया है. तो और इसके अलावा जहाँ पे बहुत ही डेंस इंटेंस यानी कि घुटन वाली कोई ऐसी डायलॉग या सिचुएशन होती थी, वहाँ पे डेड स्टिल कैमरा होता था. अच्छा, और भी इंटरेस्टिंग किस्म के शॉट्स है, जैसे अगर एक सीन से दूसरे सीन में जाना है तो मे बी देयर इज़ वन शॉट ऑफ फवाद खान रनिंग ऑन द जॉगिंग ट्रैक, तो ऐसे पैन किया उन्होंने पूरा शॉट. ठीक है, लाइक देयर आर नंबर ऑफ वेज टू टेक इट, कि आप उसके अंदर भी स्लो ट्रैक इन करें या आप उसके अंदर स्टिल शॉट लें. तो वो एक सीन से दूसरे सीन में ऐसे पूरा उसका भागते हुए पैन किया, एंड देन दे वेंट टू द नेक्स्ट सीन. एक इंटरेस्टिंग यूज़ उन्होंने किया था कि एक रोटेटिंग शॉट था जिसमें मौलाना साहब मस्जिद में बैठ के जिहाद का मतलब एक्सप्लेन कर रहे थे, कि वो दोनों एंगल्स में कैमरा चल रहा था, उसकी इंटरकटिंग आपस में हुई थी, एंड दैट वाज क्रिएटिंग दैट इंटेंस मोमेंट एज वेल. एंड क्योंकि वो बात ऐसी हो रही थी वहाँ पे कि इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग टू फ्यू पीपल मे बी जो उसके ग्रुप के हैं, yet he's trying to convince them, and yet he feels के what he's saying is true to the God. तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चॉइस था फ्रेमिंग का और कैमरा मूवमेंट का. सो व्हाट आई सॉ इन द फिल्म वाज कि ऐसे ही नहीं फ्रेम्स बनाए हुए थे. देयर वाज अ कंप्लीट लॉजिक, रीजनिंग, एंड यू नो अ प्रेजेंस ऑफ द फ्रेम एंड इट्स मूवमेंट in that certain point of dialogues, because the dialogues were especially driving how the camera movement choice has to be made. अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेजर गलतियाँ, नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें निकालूँ फिल्म में, टेक्निकली स्पीकिंग, but it's really hard for me to find apart from the slight editing flow thing. But now when I talk about the characters and their journey, usually यही होता है कि यहाँ पे फिल्म कमज़ोर हो जाती है या क्लाइमेक्स की तरफ कमज़ोर हो जाती है. ऐसा नहीं है. The characters' journeys has been meticulously played out. It tells that the screenplay, the story was written in such pure detail कि there was no room for error. आपका जो मेन लीड्स में शान शाहिद थे, उनकी जो जर्नी दिखाई है कि लाइक ही वॉज अ नेचुरल बॉर्न सिंगर, जैसा उन्होंने दिखाया, एक म्यूजिशियन थे. फिर उनके घर में वो एक रेजिस्टेंस शुरू होती है, या जो उनका भाई है उसका माइंड चेंज हो रहा है, वो भी म्यूजिशियन था, वो थोड़ा सा इस्लाम की तरफ जाना शुरू हुआ था, एंड देन ही वॉज रेजिस्टिंग, ही वॉज ओपन माइंडेड, रेजिस्टिंग टू दोज थिंग्स विच वर क्वेश्चनेबल, बेसिकली नॉट रेजिस्टिंग फॉर द सेक ऑफ रेजिस्टिंग. तो ये बहुत अच्छा बैलेंस रखा था कि ऐसे नहीं कर रहा वो भी. ही हैड हिज ओन आर्ग्यूमेंट्स, हिज ओन सैनिटी अटैच टू इट. वो बहुत अच्छा था. फिर दोनों भाइयों में जो रिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता, लाइक वो दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन देयर डिफरेंट पाथ्स आहिस्ता आहिस्ता. वो एक बहुत खूबसूरत जर्नी था दोनों कैरेक्टर्स का, देखने को जो मिला इस तरह से. एंड देन शान वेंट टू USA टू pursue even further in music, and Fawad Khan went on to pursue jihad, and he was fighting in the name of religion and Allah. तो वो उस तरह से दिखाया है, वो जिस तरह से कैरेक्टर्स दोनों जा रहे थे, बहुत लाइक एज अ व्यूअर यू कुड फील इट कि यार ये किस तरह से जा रहा है, और बहुत मज़े का था. जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए था कैरेक्टर्स आर्क और जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन, वो ईमान अली के कैरेक्टर की थी, क्योंकि the most sensitive topic was around her character, and B,
I would say she was the one who was the biggest victim amongst all characters. Yes, Shan Shahid had his own challenges, being tortured and everything, but Iman Ali's character was something that stood out to me. और फिर उसका जर्नी, लाइक उसके साथ वो टॉर्चर, उसको किडनैप करके धोखा दे के उसको फिर ट्राइबल एरियाज में जाके उसकी शादी ज़बरदस्ती कराना एंड एवरीथिंग. And then eventually she turned down to a point when she was free from that area, and she chose not to go back to England, and she pursued to fight the case against all the people she thought were responsible of her position and situation. ये बहुत interesting था मेरे लिए. This was a moment that created that scent of courage into me. Now remember, me watching this as a 17-year-old, I would say run. चलो जाओ भाई, अब तुम आज़ाद हो गए, भागो, निकलो यहाँ से, चिल करो, जाओ. But it was very shocking for me कि अच्छा, she's staying and she's going to fight about it. She's going to take them to the court. Like, that is very bold and courageous. So being a woman, and you showed her courageous, especially in this society, that was amazing. I mean, that sends a message to so many people out there. And me watching it recently now, it again gave me that certain threshold to think on these lines as well. कि courage जो है, that is one of the biggest things to have in you. और lastly, शान शाहिद का जो character change था, because he was well within his musical senses, he was living a good liberal sort of life, and then suddenly he got trapped. उसको CIA और वो FBI पकड़ के ले गई, उसको torture किया जिस तरह से. He stood firm over there, and eventually he was broken down, and it was not easy. And the way they showed it that it was not easy made even more sense, because he was one of the most maturest characters in the film, even more than his dad, I guess. He was courageous as well. He was understanding as well. He was he was forward thinking as well, and yet he was respectable to the religion. So उसका जो कैरेक्टर आर्क क्रिएट करना था, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके ऊपर जितना टॉर्चर किया और वो सीन्स जिस तरह से बिल्ड किए, दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड जस्टिफाई कि हाँ, ये बनता है, शान का अब टूटना बनता है, अब इसका कैरेक्टर चेंज होना बनता है. एंड आई कुड स्लीप विद दैट. Whereas Fawad Khan's character is concerned, he did go out into long frenzy of following and finding his true meaning of the religion, and through different scenarios, like छोटी सी बीच में जब वो war होती है और वहाँ पे उसको नज़र आता है कि मुसलमान का दुश्मन हुआ है, then he starts to question all of the teachings that he was getting. वहाँ से फिर उसका जर्नी चेंज होना शुरू होता है. Then he starts realizing that whatever he's doing is not right. Maybe he starts questioning it again. थोड़ा सा सेंसेस में वापस आता है. फिर वो केस वाला सीन होता है सारा. फिर वो नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर ने आके जिस तरह से वो अपनी एक अदर साइड ऑफ द अदर एंगल, द अदर साइड ऑफ द कॉइन दिखाता है. तो वहाँ पे फिर वी कुड सी इन द आइज़ ऑफ फवाद खान इन द कोर्ट रूम, he was going through that transformation, and then how beautifully his character's role was ended in the climax scene, that yet he kept his beard, yet he was wearing jeans and shirt, and he was at peace with that. He came out of those notions के जो हमें बांधे रखती हैं कि what is true Muslim, how a true Muslim should behave, and yet he came to the mosque to give the azan. So I mean, इससे बेहतरीन character completeness नहीं हो सकती थी. So it was super on this end as well. So this was my take on film Khuda Kay Liye. I hope you liked it, and a huge respect for Shoaib Mansoor Saab. Thanks for giving us this masterpiece, and thanks for letting us question and ponder and think about जो हमारे society के हमारे मसले मसाइल हैं, हम उसके ऊपर reflect कर सकें.
and yeah, and thank you so much for creating this masterpiece film from a technical point of view as well. As a filmmaker, I really enjoyed it, and I would really encourage जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी, please do go watch it. And inshallah, we're going to meet you again in our next film review as well very soon, and that would also be from Shoaib Mansoor Saab's Bol film. See you.